Hello students, welcome to my YouTube channel JEE Math Guru. In this lecture, we are going to see very important concept of the topic vector, and the concept or the formula is component of vector A along and perpendicular to vector B. And using this concept, we are going to solve these three problems. All these three problems are depend on this concept, component of vector A along and perpendicular to vector B. So let us see what is the component of a vector A along B and what is the component of a vector A perpendicular to B. So these are two different formulas, and we have to divide these two formulas like this: component of vector A along the vector B and component of vector A perpendicular to vector B. So see, I will explain you how we can find a component of a vector along any other vector and component of a vector perpendicular to another vector. So I have these two vectors, vector A and vector B. So let these are the two vectors. Vector OA is A and vector OB is B. Let theta be the angle between these two vectors. And now I have to find the component of vector A along the vector B. First we will find the component of vector A along the vector B. So what is the component of a vector A along the vector B? So from this point A, I will draw perpendicular on OB, that is on the vector B. Let this is the point M. So this vector OM is in the direction of vector B. This vector is in the direction of vector B. Therefore this vector OM is called component of vector A along vector B. See here, first we are seeing the component of vector A along the vector B. परपेंडिकुलर वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू बी मैं आपको बाद में समझाऊंगा. फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए along the vector B. So this vector OM is called component of this vector A along the vector B. So I have to find this OM vector. This vector OM is component of vector A along the vector B. Component of vector A along vector B. So this vector is OM vector. So we know that any vector, unit vector along vector A is A vector upon its magnitude. So therefore vector A can be written as mod of A, that is magnitude, into unit vector in the direction of vector A. Okay, any vector can be written like this: magnitude into unit vector in the direction of that vector. So using this concept, I can write the OM vector, which is the component of vector A along the vector B. So component of vector A along the vector E, OM vector, first I have to write this magnitude. So length of OM is the magnitude into unit vector in the direction of vector OM, means unit vector in the direction of vector B. So that is nothing but B cap. See here, this is the magnitude and this is the unit vector in the direction of vector OM, that is the in the direction of vector B. Now in the 11th standard you must have learned the concept of projection of one vector along other vector. So that formula is very easy. Projection of vector A on the vector B. Projection of vector A on the vector B. So this length of OM is called
projection of vector A on the vector B, and we know that this projection is given by A dot B. This projection OM of the vector A on the vector B is given by A dot B upon mod of B into, तो projection of a vector and component of vector same ही है. So what is the big difference between the projection and component of vector? So projection is a scalar quantity which gives the length of that projection, and component of a vector means we are finding the vector. So projection is a scalar quantity and component is a vector quantity. So this is the length of OM is projection of vector A on vector B into unit vector B cap can be written as unit vector A vector upon mod of A vector. Similarly B cap is B upon mod of B. So the formula becomes A dot B into vector B upon mod of B into mod of B is mod of B square. So we have this formula, component of vector A along the vector B is given by A dot B into vector B upon mod of B square. So it is clear how to find the component of vector A along the vector B. Now we come to the second point, component of vector A perpendicular to vector B. Component of vector A perpendicular to vector B. So here this is the vector A, this is the vector B, this AM is perpendicular to B. So this vector MA is called component of vector A perpendicular to vector B. So how to find this vector? So just we have this vector OM vector, this is A vector and this is MA vector. So this A vector, that is OA vector plus AM vector, or we have to find the AM vector. So OA plus AM vector is equal to OM vector. This is my triangle law of addition. Is it clear? OA plus AM equal to OM. So I have to find this AM vector. So this AM vector is OM vector minus OA vector, but I have to find, it is directed from point M. It is directed from point M. So therefore I will write MA AM vector as MA vector. So it is minus AM, तो इसके साइन में चेंज करूँगा. So it will be OA vector minus OM vector. Is it clear? Multiplying by minus 1 minus AM vector is MA vector, and multiplying by minus 1 to the right side, so it will be plus OA minus OM. So this is the formula to find the vector component of vector A perpendicular to vector B. So this MA vector is now component of vector A perpendicular to vector B. So this is given by OA vector minus OM vector. So here OA vector is A vector minus OM vector is component of vector A along the vector B. This is given by this formula. So the formula is A dot B into B upon mod of B square. तो इस तरह से मेरे पास ये दो फॉर्मूले रेडी हैं, और एक किस तरह से हम component of vector A along the vector B and component of vector A perpendicular to vector B डिराइव कर सकते हैं, या फार्मूला हम उसका प्रूफ कर सकते हैं, ये मैंने आपको बताया है. सो वंस अगेन आई विल रिवाइज योर दिस टू फॉर्मूलेट्स. component of vector A along the vector B is given by A dot B into B upon mod of B square, and component of vector A perpendicular to vector B is given by vector A minus A dot B into B bar upon mod of B square. So using these two formulates
we have to solve these three important problems for JEE exam. So okay students, before that we will see if we have to find the component of vector B along the vector A. अगर A और B इंटरचेंज होता है तो फॉर्मूले में किस तरह से चेंज करेंगे. So see here, first you write these original formulas, that is the component of vector A along the vector B is given by this, and component of vector A perpendicular to B is given by this. Now suppose if I have to find the component of vector B along the vector A, okay, तो इस फॉर्मूले में क्या चेंज होगा. तो पहले था अलॉन्ग द वेक्टर बी, तो अपॉन मॉड ऑफ बी स्क्वायर इंटू वेक्टर बी. अगर अलॉन्ग द वेक्टर ए है तो वी हैव टू रिप्लेस दिस वेक्टर बी बाय वेक्टर ए, एंड वी हैव टू रिप्लेस दिस मॉड ऑफ बी स्क्वायर बाय मॉड ऑफ ए स्क्वायर. राइट. नाउ इफ वी हैव टू फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलॉन्ग द वेक्टर ए, तो इसमें क्या चेंज होगा. तो अलॉन्ग परपेंडिकुलर टू बी है तो ए से माइनस किया है, परपेंडिकुलर टू बी है तो ए से माइनस किया है. अब परपेंडिकुलर टू अगर ए है तो फार्मूला विल बिकम वेक्टर बी माइनस ए डॉट बी. परपेंडिकुलर टू ए है तो ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए स्क्वायर. सो दिस इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी along the vector A dot B into A upon mod of A square, and component of vector B perpendicular to vector A is given by B vector B minus A dot B into A upon mod of A square. So okay students, these are the two important concepts of the component of vector A along and perpendicular to vector B. Let us solve some important problems depending on this concept, that is the component of one vector along and perpendicular to another vector. So see, this is the first problem on the concept of component of a vector along and perpendicular to another vector. So in this first question we have to find result part of vector A. See here students, we have the component of vector A along and perpendicular to vector B. So this result part of a vector along and perpendicular to another vector is also called as component of a vector. So don't be confused, result part यानी component ही होता है. Okay, so component of vector A along the vector B, component of vector A along the vector B is A1 vector, and that perpendicular to vector B is A2 vector, and we have to find A1 vector cross A2 vector. तो A1 और A2 के फॉर्मूले जस्ट वी हैव सीन, फॉर्मूले अपने तरफ रेडी है. सो फर्स्ट आई विल राइट दिस A1 वेक्टर, एंड दिस A1 वेक्टर इज कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A along the vector B. So A1 vector is component of vector A along the vector B. Just we have seen the formula, that is given by A dot B along the vector B है तो into B vector upon mod of B square. Okay, and now I have to write this A2 vector. So A2 vector क्या है, component of vector A perpendicular to vector B. So this A2 vector is perpendicular to vector B है. सो A वेक्टर से मैं माइनस करूँगा A1 को, इस कंपोनेंट को, तो फार्मूला आप चेक कीजिए. सो दिस इज A वेक्टर माइनस A डॉट बी इंटू बी अपॉन मॉड ऑफ बी स्क्वायर. सो फार्मूलेज आर रेडी. नाउ वी हैव टू टेक ओनली क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ A1 एंड A2. सो सी स्टूडेंट्स, A1 cross A2 is, so A1 vector is A dot B into vector B upon mod of B square cross. Now this is A2 vector. So A2 vector is A1 vector minus A dot B into B vector upon mod of B square. So we will use the properties of cross product. So this is A cross B minus C.
A cross B minus C. So this cross this minus this cross this. So simple. So now this is a scalar A dot B upon mod of B square. ये तो स्केलर है. वेक्टर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होगा B क्रॉस A राइट. ये माइनस. नाउ again this and this are scalar, so A dot B into A dot B square, mod of B square into mod of B square is mod of B to the power 4 into vector cross vector is B cross राइट. अगर वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट में हमें दिया है A क्रॉस B माइनस C, तो हम उसे लिख सकते हैं A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C. So using this distributive property of cross product, but we know that B cross B is a zero vector. Cross product of two same vector is always a zero vector. So this total term will become zero vector, and my result is now A dot B into B cross A upon mod of B square. And this is the answer to this question. So this was the first question. Now we'll see the question number 2, and using component of vector A along and perpendicular to vector B. तो इसके लिए आपको सभी प्रोडक्ट्स के फॉर्मूले और कंसेप्ट्स मालूम होने चाहिए. इतना भी इजीली आप सिर्फ फॉर्मूले यूज़ करके नहीं सॉल्व कर सकते. उसके लिए आपको स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये सभी प्रोडक्ट के फॉर्मूले एंड कंसेप्ट्स आनी चाहिए. तो फॉर्मूले यूज़ करने के बाद उसे सिंप्लीफाई करने के लिए ये सभी प्रोडक्ट्स का नॉलेज ज़रूरी है. सी द क्वेश्चन नंबर 2. हियर अ वेक्टर ए इज एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू वेक्टर्स अल्फा एंड बीटा along and perpendicular to given vectors B bar. So alpha vector is component of vector A along the vector B, and vector beta is component of vector A perpendicular to vector B, and it is given that A vector is expressed as sum of these two vectors. So alpha vector is, in question number 2, alpha vector is component of vector A along the vector B. So we know that this vector is given by A dot B into B upon mod of B square, and beta is component of vector A perpendicular to given vector B. Now it is given that also a vector is expressed as sum of these two vectors. So अल्फ़ा वेक्टर प्लस बीटा वेक्टर. तो यह डायग्रामेटिकली मैं आपको समझाता हूँ. दिस इज़ द वेक्टर ए, दिस इज़ द वेक्टर बी, दिस इज़ अल्फ़ा वेक्टर एंड दिस इज़ बीटा वेक्टर. सो अल्फ़ा इज कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए along the vector B, and beta is component of vector A perpendicular to vector B. So A vector equal to alpha vector plus beta vector. This is not new. This is by triangle law of addition. Now we have to find the vector beta. Okay, so vector beta is A vector minus alpha vector. Vector A vector beta is, थोड़ा ऊपर लिखता हूँ. So this beta vector is A vector minus alpha vector. ये फॉर्मूला ही है. तो इसमें पूछा कुछ नहीं है, आपको पूछा है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, तो उसी को हमको सिंप्लीफाई करने का था. सो ए वेक्टर माइनस अल्फ़ा वेक्टर इज कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलॉन्ग द वेक्टर बी. सो दैट इज ए डॉट बी इंटू वेक्टर बी अपॉन mod of b square. So it is mod of b square into vector a minus a dot b into vector b upon mod of b square.
लेकिन आंसर आप यहाँ पे ऑप्शन दिए थे, लेकिन मैंने सिर्फ आंसर्स लिखे हैं, तो आंसर इस फॉर्म में है बी क्रॉस ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ बी स्क्वायर। तो ये क्या है? अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स की, ये एक्सप्रेशन उसी फॉर्म में है। कैसा है? मॉड ऑफ बी स्क्वायर कैन बी रिटन एज बी डॉट बी, mod of b square can be written as b dot b into vector a minus this a dot b into vector b upon mod of b square। ओके, अब देखिए इस एक्सप्रेशन को b डॉट बी इंटू वेक्टर ए माइनस ए डॉट बी इंटू वेक्टर बी को मैं b क्रॉस ए क्रॉस बी कैसे लिख सकता हूँ? सो सी द फॉर्मूला ऑफ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। फर्स्ट क्रॉस सेकंड क्रॉस थर्ड, यानी ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो इसको हम कैसा लिखते हैं? फर्स्ट डॉट थर्ड, फर्स्ट डॉट थर्ड इंटू सेकंड माइनस, अब इंटू सेकंड किया है तो अब इंटू थर्ड कीजिए, अब इंटू थर्ड किया है तो फर्स्ट डॉट second. This is the formula of vector triple product. Now see here, first dot third, a first dot third into a minus a dot b into b. So this expression is nothing but this. तो इसको हम सिंप्लीफाई करके एक एक्सप्रेशन आता है या नहीं आता है चेक करेंगे। सो इट इज़ b क्रॉस a क्रॉस b. So this is first क्रॉस सेकेंड क्रॉस थर्ड। सो सी हियर फर्स्ट डॉट थर्ड है इंटू सेकेंड ए वेक्टर माइनस फर्स्ट डॉट सेकेंड बी डॉट ए यानी ए डॉट बी इंटू थर्ड यानी बी वेक्टर। सो दिस एक्सप्रेशन इज नथिंग बट बी क्रॉस ए क्रॉस बी। तो इसमें फॉर्मूला यूज किया है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 2 एंड द प्रॉब्लम इज वेरी इजी। इसमें जो हमें बीटा बार पूछा था दैट इज़ द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, यही फार्मूला हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे। तो क्वेश्चन में दिया था बीटा वेक्टर इज अ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 2 एंड नाउ लेट अस सॉल्व द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर on the concept of component of a vector along and perpendicular to another vector. So here in this last question 3 we have given ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram such that AB vector is Q, AD vector is P and angle BAD is an acute angle. If vector R is vector that coincides with altitude directed from vertex B to the side AD, then vector R is. Okay, so vector R is coincides with the altitude directed from the vertex B. So first I will draw this perpendicular directed from the vertex B. तो इसमें मुझे पैरेललोग्राम किस तरह से मैं बनाता हूँ देखिए। दिस इज़ द पैरेललोग्राम ABCD। ए बी वर्टेक्स मैंने ऊपर ली है, उसका रीज़न है मुझे बी वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का है, दैट इज़ द अल्टीट्यूड। सो ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम सच दैट AB वेक्टर इज Q, दिस AB वेक्टर इज Q, AD वेक्टर इज P, right? Angle BAD is an acute angle. This is any acute angle theta. If R vector is vector that coincides with altitude directed from B, altitude directed from B यानी B से डायरेक्शन दिया है, this is the altitude यानी perpendicular to the side AD. So I have to find this R vector. R vector coincides with this altitude directed from point B to the side AD यानी मुझे BM वेक्टर निकालने का है। तो अब आपके सामने पिक्चर क्लियर है।
bm vector is component of vector q along the vector p but in opposite direction, but in opposite direction। तो एक ही लाइन में इसका आंसर है, एक ही लाइन में आंसर है। अब अपना फॉर्मूला देखिए, ओरिजिनल ए बी, दिस वाज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, और इसका फॉर्मूला क्या था, परपेंडिकुलर टू बी है तो ए माइनस ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी स्क्वायर इंटू वेक्टर बी, राइट, डायरेक्टेड अपवर्ड्स, लेकिन यहाँ पूछा है डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, डायरेक्टेड फ्रॉम वर्टेक्स बी, तो इसका सिर्फ हमें साइन चेंज करने का है। सो आर बार वेक्टर इज bm vector and that is the component of vector q, component of vector q perpendicular to what, vector p। so but we have to find mb bm sorry r bar, ये जो फॉर्मूला है इसलिए है, so it is mb vector, this is the mb vector, right। mb vector is component of vector q along the vector b, but we have to find the vector bm, so it is minus mb and this is the vector minus r bar, so minus mb vector is this directed upwards, तो यही फार्मूला यूज़ करने का है। सो परपेंडिकुलर टू p है तो यहाँ पे अपॉन में p आएगा, तो माइनस क्यू है तो ये क्यू से माइनस होगा, सो इट इज़ माइनस ऑफ, सो व्हाट इज एम बी वेक्टर, सो दिस एम बी वेक्टर इज क्यू माइनस इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट पी डॉट पी अपॉन परपेंडिकुलर टू पी है तो मॉड ऑफ पी स्क्वायर इंटू वेक्टर पी, सो मल्टीप्लाइंग बाय माइनस इट इज़ माइनस क्यू माइनस माइनस प्लस p dot p, sorry p dot q not p dot p, p dot q, p dot q, a dot b, p dot q अपॉन मॉड ऑफ p स्क्वायर को हम लिख सकते हैं p dot p इंटू वेक्टर p। सो दिस इज क्लियर दैट दिस इज माइनस q प्लस p dot q अपॉन p dot p इंटू वेक्टर p। सो these three problems are depend on the concept component of vector A along and perpendicular to vector B। तो इसके फॉर्मूले आप प्लीज़ नोट कीजिए एंड अगेन once again solve these three problems yourself so that you can't remember these formulas। so okay students, bye, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।